Hi guys, welcome to the eLearno. This is actually the lecture number 14 of the operating system. In this video, we're going to learn about the PCB, that is process control block. So let's get started. The PCB is actually a data structure that contains certain information about the process. What does the line mean? It means that a PCB is actually a data structure that contain information about the process, the information that are essential to know about the process. मीन्स वो इंफॉर्मेशन जो जरूरी है एक प्रोसेस के पास होना वो सारी इंफॉर्मेशन पीसीबी कंट्रोल करके रखता है द पीसीबी अपने अंदर स्टोर करके रखता है यू कैन से हर एक प्रोसेस का अपना खुद का पीसीबी होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में विच इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स फंक्शनिंग ओके The PCB is a central store of information that allow the operating system to locate all information about the process. It basically central store of information you can say or central base of information जो सारी information about a particular process अपने अंदर store करके रखता है. Several type की information होती है PCB में. जैसे एक process का PCB है that contains several types of information about the process. But वो जो information है that can वेराई अपॉन द प्रोसेस कि वो प्रोसेस किस तरीके की है उससे वेराई करती है बट जर्नल पीसीबी कुछ तरीके की इंफॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर करके रखता है वो जर्नल इंफॉर्मेशन जो पीसीबी अपने अंदर स्टोर करके रखता है वो कुछ इस तरीके की होती है फर्स्ट इज प्रोसेस स्टेट प्रोसेस आईडी और नंबर प्रोसेस काउंटर रजिस्टर्स सीपीयू scheduling information list of open files memory limits accounting and IO status. Let's understand all of these one by one. Okay. The first is process state. Process state is actually contain the state of a particular process. I have discussed the states of process with you in the previous video. State of a process is basically the states in which a process will go during its life cycle. Whether it is in a ready state, whether it is on a wait state, whether it is running state, it basically contains the state of a process, a state of a particular process कि किस state में आपकी कोई process है वो हमें process states बताता है ठीक है. The next thing is process number or process ID. You can say every process in a computer have a particular ID or you can say identification number. So process state contain that particular identification number of a particular process. That क्या उस process का identification number है. Okay. So this is the process number. Now the process counter. So you know that a process is a set of instructions, basically a set of instruction or you can say combination of instruction. जो instruction एक एक करके execute होती है तो हम कहते हैं पूरी process execute हो गई जब सारी instructions execute हो जाती है उस process की. So process counter is basically contain the address of the next instruction to be executed. It means जो instruction next execute होने वाली है उसका address process counter अपने अंदर स्टोर करके रखता है. Okay. The next thing is register. As you know, the CPU is basically contain a number of register, and the number of register and the type of register that a CPU contain is basically depending upon the computer architecture that you are using. Okay, there are various type of registers: general purpose register, stack pointer. There are various type of register. Okay, these registers are basically contain the information about the process states. Basically it means that whenever suppose there is a process CPU is going to execute a particular process वो CPU उस particular process का work execute कर रहा है suddenly an interrupt occur और CPU किसी और process को चाहिए तो CPU क्या करेगा उस करेंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस का जो वो एग्जीक्यूट कर रहा था उस प्रोसेस का स्टेटस सेव करेगा कि उसने कहां तक उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर लिया है वो चीज सेव करेगा रजिस्टर्स में. ओके, देन आफ्टर वो उस इंस्ट्रक्शन को उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने जाएगा जिसने CPU को इंटरप्ट किया है. ओके, और उसके बाद जब वो उस प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करके आ जाएगा जिसने CPU को इंटरप्ट किया था बीच में उसने उस प्रोसेस को पूरा एग्जीक्यूट करके आ जाएगा देन वो उस
प्रोसेस का दोबारा से एग्जीक्यूशन जब स्टार्ट करेगा तो वहीं से स्टार्ट करेगा ना जहां से वो रुका गया था। ऐसा थोड़ी कि वो दोबारा से शुरू से स्टार्ट करेगा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना। ऐसे तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा ना, कि आधा उसने एग्जीक्यूशन कर लिया था, फिर किसी और प्रोसेस ने उसको बीच में रोक दिया, वो उस रोकी हुई प्रोसेस का काम करने चला गया, उसके बाद जब वो आया तब वो दोबारा से कर रहा है। ऐसा नहीं होता। जब वो आएगा तो वहीं से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा जहां से वो रुका था। और ये चीज उसे कैसे पता चलेगी कि मैं यहाँ पे रुका था? तो ये चीज, वो स्टेटस जहां से वो रुका है, वो स्टेटस वो ये रजिस्टर्स में सेव करता है। Okay, I hope you guys understand about that particular thing. The next thing is CPU scheduling algorithm. CPU scheduling information, sorry. CPU scheduling information that a CPU allocate करते हैं हम different processes को. Okay, तो इस ये information basically contain करके रखता है process की priority क्या है. क्या आपकी प्रोसेस की प्रायोरिटी है? क्या आपकी प्रोसेस एक हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है? क्या आपकी प्रोसेस एक लो प्रायोरिटी प्रोसेस है? इस तरीके की इंफॉर्मेशन ये स्टोर करके रखता है. Now next thing is list of open files. List of open files means the number of files are opening within a particular process. Okay. Now next thing is memory limit. Memory limit is basically defining the amount of memory that a process want for its execution. कितनी प्रोसेस को मेमोरी, मेन मेमोरी में रिक्वायर्ड है अपना आपको लोड करवाने के लिए, ठीक है, अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करवाने के लिए कितनी मेमोरी है प्रोसेस वांट. कि मान लो अगर एक प्रोसेस 4 GB की है, हम कहते हैं ना ये 4 GB का है, ये इतने GB का है. So that's particular is basically amount of memory that particular application or particular process will need for its execution. So this is memory limit. ये information का हमें memory limit store करके रखता है. The next thing is accounting. Accounting is basically signifies the CPU times that a process want for its execution. कि कितनी देर के लिए प्रोसेस को सीपीयू की जरूरत है अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए. दैट बेसिकली द अकाउंटिंग. ठीक है, द टाइम पीरियड up to which a process need a CPU for its execution. Okay, this is basically accounting. The next thing is IO status. That is the information about the IO devices, that which IO devices a process will want for in its execution, for how much period of time it want that particular IO device. Suppose there is a process which want a printer for printing a particular thing within a process. So the information about that particular device is in IO status, and the amount of period up to which it want a particular device is also in that particular IO status. Okay. So these are the basic things that a PCB contain, A PCB of a process contain these following things. Okay. And these following things have their own roles, have their own importance, that are essential for a process to be contained. If suppose if a process doesn't contain process state, then how will you get to know about the state of a process? If a process doesn't contain a registers, let's suppose a process doesn't contain a register, then how the process will save its status, current status? Okay, so all these things are essential for execution of a particular process. So PCB, a process control block, is a data structure that contains all these necessary information about a particular process that are required for execution of a particular process. I hope you guys understand what's the PCB is, what's its importance, and what's the components that a PCB contain of a process. These are basically the journals thing that a PCB contain, or the many things there are all more with a PCB that contain, but these can be vary upon the type of processes. But these are the journal things that all process must contain. Okay. So if you guys like that particular video, please don't forget to hit the like button, subscribe button and share button. Okay. Thank you.